Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the different types of movements which are exhibited by the different cells of our body. For example, the leukocytes and the macrophages show amoeboid movement. There are cells which will be showing ciliary movement. For example, the ciliary epithelium of or the ciliated epithelium of the structure, that is fallopian tubes or trachea. This ciliated epithelium has cilia-like structure which helps in the movement of a substance. The third type of movement, which was the most prominent form of movement in all the organism, that is the muscular movements, which involves muscles. So organisms of higher classes will be having muscles for the different types of movements as well as for the locomotion. We have also discussed about the three basic types of muscles, that is the smooth muscles, the skeletal muscles and the cardiac muscles. Now we are going to talk about the ultrastructure of the skeletal muscles. We know that skeletal muscles, they are present in our limbs, they are present in the tongue, as well as they are distributed in almost all the parts of the body, and they are always attached with the bones. So movement of any organism is mainly possible due to the skeletal muscle. So ultrastructure of the skeletal muscle, when we talk about, first we need to mention that the skeletal muscles will be having presence of small bundles within it, which are known as the fascicles, or they are connected or surrounded by a connective tissue which is known as the fascia. So here we will mention the first point, that the skeletal muscle consists of large number of bundles known as fascicles and are surrounded by sheath, or you can say covering of connective tissue, which is known as fascia. तो जब हम एक मसल की बात करते हैं, तो एक मसल का जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो मसल के अंदर प्रेजेंट है बंडल्स. इन बंडल्स को, ये जो बंडल्स हैं, these bundles are known as the fascicles, right? Or you can say that fascia means the bundles that are present, but these bundles will always be surrounded by the sheath of connective tissue. Okay, so they are surrounded by the connective tissue, and that is known as the fascia. So this whole skeletal muscle has several bundles. Now within each bundle there will be presence of a muscle fiber. हर एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे. अब ये मसल फाइबर्स एक्चुअली सिलेंड्रिकली लोकेटेड है इस तरह, पर जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया है इसीलिए हमें कैसा दिख रहा है, we are able to observe it as a circle only, but actually these are going to be elongated. So muscle fibers, right, these are the muscle cells. Okay, so muscle fibers, or you can say muscle cells, are present in each bundle. हर एक बंडल के अंदर, हर एक जो बंडल है उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट है. अब ये जो मसल फाइबर्स हैं, राइट, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम. बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे. Compactly arranged muscle fibers will be present. So I am mentioning this as muscle fiber. Now these muscle fibers are surrounded by the plasma membrane, which is known as sarcolemma. So muscle fibers have or surrounded by, क्योंकि हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, राइट? तो मसल सेल्स जो है उनका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, and this plasma membrane is known as
sarcolemma. The sarcolemma will be enclosing the cytoplasm, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे भी मसल सेल्स का साइटोप्लाज्म है, बट इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म. सो सार्कोलेमा encloses the cytoplasm of muscle cell, which is known as sarcoplasm. So sarcolemma will be enclosing the sarcoplasm. Now this sarcoplasm is not uninucleated, but there is a syncytium condition where there are more than one nucleus present. So we will mention that sarcoplasm is multinucleated or syncytium. राइट, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is known as sarcoplasmic reticulum. तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वैसे तो मसल सेल्स में भी सारे ऑर्गेनल्स होने ही वाले हैं, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. क्या स्टोर होता है, कैल्शियम स्टोर होता है. तो वापस एक बार ब्रीफली देख लेते हैं. तो स्केलेटल मसल का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो we will be able to see many such bundles. These bundles are known as the fascicles. Bundles are surrounded by a connective tissue. This is a connective tissue से surrounded bundle को कहा जाता है fascia. Right? हर एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, या तो हम कह सकते हैं मसल सेल्स हैं. हर एक मसल सेल में, in each muscle cell there will be presence of the cytoplasm, जिसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म में होते हैं कई सारे न्यूक्लियस, तो उसे कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म. ठीक है, और उसके सराउंडिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सार्कोलेमा. साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो सार्कोप्लाज्म है उसमें ऑल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, which are made up of two different proteins, actin and myosin. So there is presence of alternate light and dark bands in the sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म में ऑल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा. एंड दीज ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स. व्हाट आर दे नोन एज, मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स. In the cytoplasm of the muscle cell, there is presence of alternative light and dark band-like structure. These band or fiber-like structure present in the cytoplasm is known as the myofibrils or myofilaments. This myofilaments will be of two types, that is thick myofilament and thin myofilament. The thick myofilaments are made up of protein called myosin. किससे बनते हैं, myosin. और ये जो thin है, they are made up of actin, mainly actin, troponin and tropomyosin. तो कहने का मतलब ये है कि मायोफाइब्रिल्स जो है वो इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और वो मायोफाइब्रिल्स दो तरह के दिखते हैं. थोड़े मायोफाइब्रिल्स डार्क है और थोड़े लाइट है, या कह सकते हैं कि थोड़े थिक होते हैं
और थोड़े थिन होते हैं। जो थिक होते हैं वो बनते हैं एक ही प्रोटीन से जिसे कहा जाता है मायोसिन, और जो थिन है वो 3 प्रोटीन से बनते हैं, पर उसमें मेन है एक्टिन, सम अमाउंट ऑफ ट्रोपोनिन and some amount of tropomyosin. So let us look at the diagram of that myofilaments. So as I said, let us have a look on the ultrastructure of the skeletal muscle. So first of all, I will be showing this structure that will be known as the plasma membrane, right? This will be the plasma membrane of the muscle fiber. Consider कर लीजिए कि ये एक muscle fiber है, ठीक है? Muscle fiber कहाँ पे है? तो जो हर एक जो बंडल है, राइट, जो fascicles हैं, उनके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो ये है पूरा मसल फाइबर, दिस विल बी द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दैट दिस विल बी नोन एज द sarcolemma. What is this diagram of? It is the diagram of a muscle fiber. तो जो मसल फाइबर है उसके अंदर जो पूरा रीजन है ये साइटोप्लाज्म है, जिसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। पर सार्कोप्लाज्म में होता क्या है, तो अभी हमने लिखा था दैट सार्कोप्लाज्म विल बी हैविंग थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स। सो फर्स्ट आई एम शोइंग यू द थिक फिलामेंट्स which are alternating with the thin filaments. Okay, so these are the thick filaments and over here are the thin filaments which are alternating with the thick filaments. Right? So here I am labeling this as a thick myofilament and this will be known as the thin myofilament. Okay, the darker bands are known as the A bands. I am mentioning over here certain points. Darker bands, that is of the thick myofilament, these are the A bands. What are they known as? A bands. Here A stands for anisotropic. A stands for anisotropic, whereas lighter bands, or you can say thin myofilament, is the I band. I band stands for isotropic. So here I will mention that the thick band, that is the A band, and this will be known as the I band. Okay. Now here there will be a line which will be bisecting the thin filaments. एक ऐसी band है, एक ऐसी line है which will be bisecting the thin filaments, and this line or this structure is known as the Z line. Okay, और Z line से attached कौन होगा? Thin myofilament will be attached to the Z line. So there is presence of the Z line to which I band, or you can say thin filament, is attached, and it will be bisecting the I band. Another thing is that in the center there will be presence of the M line. In the center there will be presence of one more imaginary axis like structure which is known as the M line. The place usually I band जो है वो A band को overlap कर रहा है, या हम कह सकते हैं thin filaments will be overlapping the thick filaments, but there is place where thin and thick filaments
do not overlap each other and there is presence of only the thick bands. मतलब इतनी अगर हम जगह देखें तो इतनी प्लेस में क्या है, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा और वहां पे सिर्फ थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट है, तो उसे कहा जाएगा H zone. It will be known as the H zone. So this much region is known as the H zone. So the region without overlapping, the region without overlapping of thick and thin filament is known as the H zone. Is known as the H zone. Usually जब हम A बैंड की बात करते हैं तो इतना रीजन पूरा ये A बैंड होता है. A बैंड मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ ये जो पिंक लाइन पूरी दिख रही है वो पूरी A बैंड है. मतलब A बैंड में मेजॉरिटी पोर्शन क्या है, थिक फिलामेंट, बट माइनर पोर्शन क्या है, थिन फिलामेंट भी होता है. इसीलिए हम कभी थिक फिलामेंट को डायरेक्टली A बैंड नहीं बोलते. थिक मायोफिलामेंट मतलब ओनली द पिंक लाइन which is made up of protein myosin. Thin filament means only the white line which is made up of actin, troponin and tropomyosin. But when we use the word A band, so A band actually has portion of thick myofilament with a small portion of thin myofilament also. Okay, so A band has majority of thick filament plus small overlapping thin फिलामेंट. जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा या काम नहीं कर रहा तब ये रेस्टिंग कंडीशन में इस तरह दिखेगा. ठीक है, देयर इज द सार्कोप्लाज्म, देयर इज सार्कोलेमा, ऑल्टरनेटिव मायोफाइब्रिल्स हैं, डार्क मायोफाइब्रिल्स, लाइट. डार्क को हम बोलेंगे थिक मायोफिलामेंट्स, इन्हें कहेंगे थिन मायोफिलामेंट्स. थिक मायोफिलामेंट्स बनते हैं मायोसिन से, थिन बनते हैं एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से. दूसरी चीज कि ये ऑल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे, तो यहां से इतना जो डिस्टेंस है, दिस होल डिस्टेंस विल बी नोन एज द ए बैंड, whereas this white line will be known as the I band. White line is being bisected by one more membrane which is known as the Z line. इसे ये भी कहा जाता है membrane of Krauss. It is also known as membrane of Krauss. And there will be a place where there is no overlapping of thin and thick bands. Only thick bands are present, which is known as H zone, that is Hansen's zone. Hansen's zone कहा जाएगा. And in between there will be an axis called M line. The distance between the two Z lines is known as the sarcomere. Distance between two Z lines is known as sarcomere. And when a muscle contracts, these two I bands are going to slide in the space between the thick bands. Thin bands are going to slide in the space between the thick bands. So sarcomere is going to shorten because the two Z lines are going to come closer. So that is when we will understand about the mechanism of muscle contraction, which will be our next topic. Till now you just have to remember the structure of the skeletal muscle and how the myofibrils are arranged within the muscle fiber or muscle bundles.